ये क्या हो रहा है दोस्तों? यार कहाँ आ गए? My entire life, रोशनी I've में always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the पिंजरे में? sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. वो अपना ये भी बाहर है फोकस. When I heard that हथियार you इधर ही had रखे. survived, a doubt took root in my mind. थोड़ा सा नीचे से हाथ डाल देते तो शायद As आ sure as जाता. the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? तो इससे 3 क्वेश्चन पूछने हैं. रोस्ट के बारे में पूछूंगा भाई. See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain, meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you here, so that you might die as a sacrificial offering to the sun. क्या? ओ, Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. You are thug, you are fool, you are puppet. इसको तो You're an fool ही idiot. बुलाऊंगा. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. इसने भी वो करना है Shadow to focus. sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land.
I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. They cast me out. नहीं, needless slaughter. They are irrelevant. अरे यार ये क्या है? इसमें से क्या चूज करो अभी? रोस्ट तो हो गया ना? ओ अरे सॉरी, ये मूवी देख रहा था बैठे बैठे। अबे नहीं, कुछ चल रहा है, चलने दो। अबे को सुनाई तेरा भाई, तो मैं थोड़ा सा अरे हाँ, देगा ना। तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, कब तक सबटाइटल पढ़ के जिंदगी निकालेगा? सही है, सही है। ध्यान चला जाता तो है। नोरा ट्राइब जहाँ से अभी हम बिलोंग करते हैं, जिस ट्राइब ने हमें पहले बाहर निकाला था, लेकिन अभी हम लोग उस ट्राइब में हैं, तो उसके बारे में कुछ बुरा भला उनको मारने के लिए ऑर्डर्स भेज दिए इसने पहले ही, तो इसको कुछ बोलना पड़ेगा ना उसके लिए। दे कास्ट में आउट नहीं यार, हम लोग ने वापस तो ले लिया। दे आर इररिलेवेंट। Needless slaughter. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. तोड़ दिया। पावर है। So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. इसने वहाँ पे जा गया, मैदान था वो भी। Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Oh shit, corruptors. कैसे से लड़ना पड़ेगा अभी? Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithfuls crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! वाह वाह बेटे वाह। नहीं, मेरे को ऊपर जाना है। तो पिंजरा पकड़ लेती ना ऐसे ही, ऊपर तो खींचेगा ना वो पिंजरे को। ना तो अपने पास अपना आर्मर है। My weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. अरे क्या यहाँ पे वेपन्स क्यों नहीं है? अरे वाह मेरे शेर। भागने का रास्ता नहीं होगी।
करना जरूरी है। नहीं ना, अरे मार दिया, करेंगे 50% कर दिया। इसको हटा देने में। I should try luring the behemoth into the pillars. अच्छा पिलर में, हाँ आजा 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 आजा। That pillar's weak. अरे वाह, Another hit, खुद ही and टूट that गया pillar पहले। will come down. आजा 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 आजा, शाबाश, हेल्प कर लो। The walls look strong, but the pillars don't. They weren't अरे built to take a charge from a crazed behemoth. वो तो पहली बार मेरे को दिख भी नहीं रहा हुआ। That did it. एक One नंबर। more pillar and that platform will come down. And my weapon's won't. It's down. शाबाश। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे वाह, आजा 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 आजा। अभी धूल में से आयरन बन के आएगी। सॉरी कैप्टन मार्वल। ओह देगा देगा देगा। ओहो हो, हम बाहर आके शो ऑफ करना जरूरी है। पीछे तो देख लो। Hey! Guess who got our weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Those components on the sides of its head. They've got something to do with his lift attacks. अरे फोकस तो नहीं है ना। तो वापस पत्थर उछालेगा। हेल्थ हेल्थ हेल्थ, हाँ सही है, अच्छा तो चिल्ला है। मैं अभी नहीं चला, मैं बहुत देर पहले चला। हाँ 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 हाँ। अरे मान लो तेरे को इतनी लेट क्यों गई है? नहीं, मैं तो सुन लिया था तभी, लेकिन मेरे को पता, दिमाग तक बहुत लेट से पहुंचा। हाँ, मतलब तो बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि हेल्थ उठा ले, ऐसा बोल रहा है। फिर मैंने हेल्थ बार देखा। अरे शेर, अरे मारना ही पड़ेगा तेरे को, ऐसे भी नहीं तो नहीं। हाँ अरे अच्छा हाथी है ये। हाथी है। Freeze canister on its head. ऐसा हाथी फेंकता है ना चीजें, अगर फेंकना भी चाहता अच्छा 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 अच्छा, है इससे ढूंढते उठाते पानी या फिर चीज नहीं क्या मिट्टी। हटो। अरे यार ये इतना दूर कैसे आ रहा है, जबकि मैंने इसको बांध के रखा है। अब हिल के दिखा बस। मारते रहे टाइम पर मतलब मारते रहे। अगर लेके भी जाओ उठ के मस्त आ देखो भाई ये। अरे बल मत है अभी देख मारते रहे खत्म कर। अरे 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 पीछे मुड़ जाओ। पाल मार रहे हैं पत्थर की। That canister on its belly. Looks important. हेल्थ कम पड़ने वाली। वो बूस्टर ले लेता। किधर गया? अरे अरे ये डैमेज देगा। अरे यार इसका इम्प्लीमेंट बहुत जोर से आ रहा है। भाई वो मैंने क्यों नहीं लिया?
सारे फर्स्ट पैसा भी तो इतना दूर से कैसे पहुंच Gotta गए? check the machine houses. They might have parts. हाँ उनके पास पार्ट होंगे, वो तो समझ ही रहा है मेरे को। अरे हेल्थ ढूंढ जो है वो तो मान ले वैसे। हेल्थ है, हेल्थ का इश्यू नहीं है मेरे को। ओह अरे तू और रडार में आ गया। ये क्या कर रहा है? ओ भाई माता जी अरे यार भागने को नहीं हो रहा है इसको। हेल्थ अच्छा ये ना तेरे बीच पे ऐसे ही जाना पड़ेगा। अरे यार कैसे मार रहा है। देखो उसको थोड़ा मार के ही जाना चाहिए। क्या कर क्या रहा है ये? अरे यार नीचे बोलो। अरे तू ओपन में मत जाएगी, मत ओपन में जाएगी, मत ओपन में रहने तो मरेंगे। लोग किधर है? ये किधर है? हट जा। टाइम वेस्ट हो गया। अरे मैं उसके रास्ते में चला गया। हट कुछ मार मार ये भेज रहा था। और 2-3 बार हट जा अभी चढ़ जा। अरे हट 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 हट। चल रुकना नहीं उसको थोड़ा सा रुकने को शुरू कर ऐसा। अच्छा यहाँ पे गेम खत्म। थोड़ी सी हेल्थ रही थी बच्चे। शाबाश गिर गया। अरे और बाहर आ जाए। ये जूता भी है क्या? गिरे ना गिरे अपने को क्या है। पहले हेल्थ कर लेना तब चीज को मारने का मेरे को हेल्थ नहीं देखेंगे। हो गया। लूटने टाइम नहीं। अच्छा कट सीन है। ओ भाई इसने ही सारे हेल्थ खा लिया, और कोई नहीं ना। ये देख। Silence! ओ भाई 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 जहर। अरे यार नहीं प्लीज। Shadows, kill her! अरे भाई क्या मतलब है ये? हेल्थ तो है नहीं मेरे पे। अरे वो दो है यार। दो है। Why leave it to them? Come get me yourself! ये देख। मरे तो मरे, लवा भी ना घटे। अलग था यार कुछ वो। फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। ओह ये रहा साइलेंस। ये क्या है? डोरेमोन की स्टिक। ओ अपने लिए भी लेके आए। अरे बहुत सही, बहुत सही। मारना है क्या? मेरे को लगा भागना है। ओ साइलेंस पूरी आर्मी लेके आया है। साइलेंस पूरी आर्मी लेके आया है भाई। ओ भाई ये लोग देख लेंगे इसको। अरे भाई ओ ये कुछ ट्विस्ट आया कहानी में। ये कुछ था।
So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. ये Too cyberpunk bad you क्यों बना wasted है? your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. साइबोर Not at बोलते all. हैं या कुछ तो The बोलते whole हैं इसे? time I've been monitoring your focus, I've मेरे को नहीं duplicated पता। every मैं data cyber file you king scanned. नहीं मैं भी नहीं खेला, मैं खेला Installing हूँ, लेकिन that data to इसमें new लोग focus कुछ was साइबोर, truly easy. I don't know. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? तो you can override machines, वो तो पता ही है, करता ही होगा वो. I got help to Nora. Helis recognize पता you. ही। दो क्वेश्चन है उसमें से इम्पोर्टेंट तो ये है Helis कि हेलिस ने recognized उसको you back in पहचाना the था. Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse, not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't हाथ पे succeed. लाइटिंग कैसे लगा है? वही तो Right. बोल रहा हूँ मैं. दाढ़ी स्टिचेस लगाया क्या? हाँ. How did you लगाया track my तो चमक location कैसे when I रहा? wasn't wearing a focus? Really, Aloy. It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I तो wore out मुझे 2 भी लगा था striders getting here starting in में. time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. वाह. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans, though of course, far more advanced. Great. ठीक है. You're... तो चले. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. वाह. What kind of... Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. वो माउंटेन जहाँ पे हम लोग मिले. Yeah! या क्या यार, तेरे साथ आने का मैं देखना है तो क्या कहाँ जाता है साला. अच्छा अब तक कटसीन चल ही रहा है. दे दो कंट्रोल्स. सो अभी फ़िलहाल मैं वापस वही आ चुका हूँ जहाँ से गेम स्टार्ट किया था, यानी कि नोरा ट्राइब के पास, जहाँ पे हम लोग मिले थे, जहाँ पे वो केस वगैरह है वहाँ पे जाने का है उसने, यानी कि जो वहाँ पे था सा, आई डोंट नो वो जो किंग कौन था, उसका नाम नहीं याद है मुझे. तो उसने अपने को बाद में कहा था कि वो नोरा ट्राइब पे भी अटैक करने वाला है. उसने कुछ लोग भेजे, कुछ मशीन्स वगैरह भेज दिए पहले से, तो वहाँ पे वही रुकने आ चुका हूँ यहाँ पे. तो देखते क्या होता है. चलिए चलते हैं. GTA 5 पहला मिशन हो गाड़ी वाला, 2 गाड़ी रहती है, एक लेके भागो. हाँ मैंने कभी PS4 खेले नहीं, कंट्रोलर जम रहे नहीं है, गाड़ी ठुके जा रही. 4 बार तो एक ही मिशन में फेल हो गया हम. और ऐसा भी नहीं कि वहां से अपन भाग के टाइम पास कर लो, कुछ और मारा पीटी दूसरी गाड़ी ले लो, वो मिशन करना जरूरी. Another defeat. हेलो. अच्छा मैं तो हाँ आगे 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 मिशन फिर आगे. वही साला उसके बाद से मैंने बोला कभी नहीं जाऊँ. वैसे मैं 11th में आ गया. दूसरा उसके पहले बचपन में सुना बहुत था मैंने, प्लेस्टेशन चलो, प्लेस्टेशन खेलने चलो, पर कभी गया नहीं था. और साला वो जगह भी अच्छी नहीं. वाले में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन लोगों को क्या सिखाते हैं, उन लोग गाली बकते हैं, उनको छेड़ते रहते हैं. मतलब तो बच्चा खेल रहा है, कोई नॉर्मल बच्चा खेल रहा ना, उसको मारेंगे, गाली बकेंगे. हाँ तेरे को आता है.
ये भाई यहाँ पे मुझे फाइट करने के लिए बुलाया, वो भी दो दो स्ट्राइडर से। भाई पागल हो गया, पहले बता देते यार, मैं आता ही नहीं। अरे भाग। अच्छा आज भी आवाज नहीं आ रही है मेरे को, जब तक फाइट नहीं चल रही तब तक ध्यान नहीं रहता मेरे को। वाह, ये तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। रुक जा एक सेकंड, प्रिपेयर कर लो। अरे कुछ कर मत तू, और टाइम पास ही होंगे। अरे इन लोग को मारने का ही है अपने, वो मेरे गेट तरफ। तक जाने का, ये लोग बीच में रास्ते में, इसलिए इतने सारे दिख रहे थे अभी रास्ते में। यहाँ पे हीलिंग भी बहुत मिल रही है, मेरे को समझ जाना चाहिए था। क्राफ्टेड है ना सब कुछ? ठीक है, अपन पहले इसको एक जगह पे रोकेंगे, फिर ट्राई करेंगे। Straight away. दो है दो रहने दे, तीन रहने दे, चार रहने दे मेरे ऊपर। तेरे को आग लगी ना गेम में, तेरे बाल अभी तक टकला हो जाना। फायर देखना कब तक रह रही है। ये उठा। जंत्रम मंत्रम में जावे जाफरी को बांधते हैं। हाँ गाड़ते ना। अरे गिर गया वो। तो देखिए जंत्रम मंत्रम। हाँ फिर क्या विलन लगता है उसका? चामुंडा फेवरेट चामुंडा। विलन है मेरा वो। अच्छी मूवी थी वो टाइम के आपसे, अंडररेटेड। बहुत बहुत सही मूवी थी, मेरे को तो अच्छी लगती थी। वीएफएक्स भी मेरे ख्याल से वो टाइम के आपसे अच्छी। कहीं तो आज तक की मूवी का मेरे को वीएफएक्स पसंद है। ओ भाई अबे भाग। एक तो सारे लाइक करने में तो लोगों को आंखों बता जाती, ये नीचे के बच्चे टन थाली बजा रहे थे। मारा नहीं तो नीचे बहुत तेज ना, क्या कूद के मारोगे? किधर गया? अब मेरे पे इतना वो भी नहीं है मेरे पे कि मैं जाके नीचे। अबे बाहर थोड़ी बजाते, घर के अंदर बजा रहे थे आपने। मुझे क्या पता, मैं इधर मशीन की बात कर रहा था। अच्छा मारा नहीं, ओ मेरे को लगा मारा नहीं। क्या बात कर रहा है? अरे ये क्या, तू बांधते रहेगा कि मारेगा अभी? पहले बांधूंगा फिर मारूंगा। गया अरे माउस नहीं चल रहा है क्या? आई डोंट नो। बाइट स्टूडियो पे देखना इसके अंदर यूज किया 55 ही है बाइट स्टूडियो पे। हाँ। अरे ये कैसे लग सकता है भाई, मैंने डॉज किया था। ये लंगड़ा हो गया क्या? तू खोल के बैठा क्या बाइट स्टूडियो? नहीं रे, मैंने अभी जस्ट मतलब यहाँ पे आने से पहले ही देखा था। जब यहाँ पे आने को भी आधा घंटा हो गया तो। सच बोल पट्टा। मशीन सर्च करते भाई कुछ। अरे 65 मेटल थ्रेड्स, ये काम की चीज बहुत मिल रही है। Tell me when you see something. किधर है? हाँ बीड़ी पी लूंगा 2 रुपए की, उसका नहीं धुआं करेंगे क्या? अरे मच्छर भगाने के लिए धुआं नहीं करते? बीड़ी क्या हो रहा है इसका? अबे उसका धुआं, बीड़ी का धुआं ज्यादा अच्छा लगता है उससे, तो इससे। ये कौन है भाई? ये कब आया? क्या ये तम्बाकू डालो, पाइप भी लगा लो, उसका बना के बैठो। सब पता है, चले पता तो हो ही जाता। क्या मालूम मच्छर लोग को भी तम्बाकू के शौक हो। वो लोग भी बैठे हुआ। अरे हटाओ ना यार, अभी मैं मच्छर हूँ, मेरे को दिखा रहे।
इतनी देर से तू 2 लोग नहीं मार पाया। अरे यार तू शांत रहना, ये तो मार खा नहीं रहा है, टाइम पे पीछे हट रहा है। अपने ग्रुप साला एक जन ये क्या हुआ इसको? अरे भाई वाह, गया ये। शाबाश, इसको लूट लेंगे फटफट फटफट। रुको रे जरा, तुम लोग को भी दिखाता है। और कोई Bleed for the shadow. आ जा रे। Redouble your efforts. The shadow don't. चल निकल। यार ये आ भी गया कौन सा? वाह, और चलो भाई, पंगा नहीं लेने का, अपन फॉर्म में आ गया तो बस हम लोग का तो खेल खत्म है। फिर थोड़ा सा लूट लो गाइस, मैं शायद स्किप कर दूंगा। 80 भाई 80। No space. क्या सी? अरे वो मेटल से अगर फोन के इनकॉग्निटो मोड से देखे तो व्यू तो पड़ेगा ना। आई डोंट नो ट्राई नहीं किया, इतने बुरे दिन कभी आए नहीं। बुरे दिन बेटा, हर अच्छे दिन के पहले बुरे दिन रहते हैं। हाँ, हर बुरे दिन के बाद ही तो अच्छा, अंधेरे के बाद ही तो रात होती है, हर 6 दिन होता है। अरे यार 17 मैं एक तो हिंदी की क्या भाई, ऊपर से तो आवाज़ें आ रही कैसी कैसी। एक तो पहले यहाँ पे मेरे ऊपर से नहीं देखना, कुछ काट का आवाज़ क्या आ होता रहा है? क्रिस्टोफर डालना था। है। क्रिस्टोफर कोलंबस पे वो, लेकिन वो तो सी से आता है ना। क्रिस्टोफर गेल नहीं, यहाँ पे के से क्रिस्टोफर है। हाँ वही, वो कैसे वो मेरे को भी नहीं पता, इसलिए मैं टीफर रखा। Can't be too prepared. क्रिस में KRISH क्रिश है वो, क्रिश ऋतिक रोशन वाला क्रिश। ओह, इट्स नॉट क्रिश, इट्स क्रिश। फिर तो तेरी फेवरेट हीरोइन होंगी कंगना रनावत। हाँ फिर क्या, फिर भाई कुछ बोलना नहीं है, मार दूंगा। एक काम कर, मॉन्टेज I'd करना have to leave something else behind. क्या, किस पे? आइडिया लीक हो है। अरे जाएगा आ रहा है, बाद में बता। अरे आ रहा है वो मॉन्टेज का नाम डाल, 3 नंबर पे आ रहा है इनकॉग्निटो। हाँ तो मेरा तो चैनल भी आ जाएगा फिर, अगर प्रॉपर नाम डालेगा तो। प्रॉपर नाम ही तो नहीं, स्पेलिंग ही तो नहीं याद रहती। क्या रहा है इसे, डबल एस यार, Red light. एच भी लगा दो, डबल एफ भी लगा दो, टी भी लगा दो, सब कैपिटल भी लगा दो। ओ भाई यार अभी अपडेट नहीं होगा, सुबह देखना 2-4 बीत तो बट। शाबाश, अभी अपडेट नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, होना चाहिए ना दोस्त। देख वाईटी पे देखता अभी क्या है, बाद में आराम से देखते ना अपन। बहुत घाई है तेरे को। हाँ नहीं, मेरे को घाई उसकी नहीं है। तो घाई तो जो जिसकी घाई थी वो तो तू बहुत ढीला कर रहा है, चलने दे आराम, कोई हर्ट। आराम से लूट तो अच्छा। अबे इस मिशन क्यों कर रहा है? तो जाके भैंस मार। More eclipse. It's a corrupted thunderjaw, right? The survivors must be holed up in the जाऊंगा mountain. कैसे मैं? If the tunnel collapses, हाँ they'll अभी be सोच buried. बैठ के यहाँ पे। And I'll never reach the hatch.
ये क्या है? गन है गन। ये सामने क्या है? सॉरी लगा ही कटसीन होगा इधर। कटसीन आ गया। अच्छा ये वो ना Braves, to Sona, Aloy's Sona. side, गायब ना हो now! जाए कहीं। सोमा। For Aloy! For the For our mother! goddess! अच्छा और एलोय चिल्लाया वो। Varl and आजा। Sona. They're still alive. An easy shot. ये देख। अच्छा वो गन किधर गई अपनी? The corruption will not take hold! पहली बात इनको मारो। Faithless and safe. May the goddess remember! Here! पहले मॉन्टेज को क्या बात हो गया, बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। I'm just concentrating on here. तू तो 4 बार अबे 4 बार अभी 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 थोड़ा दिमाग लगा के खेल रहा ना मैं। उसको पकड़ रहा हो तो ज़्यादा नहीं मार पड़ रहा है। पहले बार उसको मार ही दिया तो हम खेलते थे। अरे Bring down the अब तो सामने मार रहा है तो इनको क्यों मार रहा है? ये अच्छा ये पीछे से मार रहा है। अच्छा अपनी गन की तरह गन से काम होगा अभी। देखते हैं होता है कि और एक बार मतलब स्कैन मार ऊपर वाला तो पहले पूछ छोड़ देना था। हट जा अरे हट जा बोला था वार्निंग दी। अरे गन किधर गिर गई? गन उधर ही गिर गई। ये इतना बड़ा दिख रहा है भाई। हाँ ठीक है ना, तो मानना ही नहीं Track पड़ेगा। it down! ऐसे टाइम पे चाहिए वो ऐसी रखने वाली गन। एक हाँ जगह रखो तो अरे इसका धक्का लग रहा है, बस धक्का लग रहा है। इसमें इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते क्या? नहीं ना क्या बात है? अंडर पे मार। जहर में छोड़ रहा है। अबे गन उठाना ना। हाँ बहुत सही। अरे ये क्या बहुत ही बढ़िया। भूकंप लग रहा है क्या? टांग पे मार। तो देखिए अभी जाऊंगा मैं। वो जो बीम छोड़ रहा है ना उससे ही मर रहा हूँ। या अब जाके उठा लेगा। रुक जा एक दिमाग लगा दे थोड़ा। किधर है वो? गन से उठा। कुछ खास कुछ नहीं खास वो तो कर लेंगे। हो गया ना? कितना बांधने का? जितना हो सकता है उतना। एमो खत्म उसका भी। इसका एमो नहीं बना। ओ भाई सही। तो उठा लेना। The corruption will not हाँ take काफी hold! कम है, मार। हाँ कम। हाँ क्या मार? ले पता नहीं क्या है। आएगा भाग के उसके मुंह पे चले जाना। वाह इधर आ भी नहीं रहा था। सॉरी इधर आ ही नहीं रहा था जब मार टाइम कम। Track हाँ it बीच down! कुछ मार। क्या बचा है उसका? पूछ। अरे वो मार दिया, मर ही गया। गया भाई साहब। 50 साल ये बाद थी We इधर। did it! ये थी इधर। Aloy did it!
We only help. एमओ भी था इसमें अबे 60 उसमें एमो नहीं है ना। 60 एमओ था। तूने तो बोला नो एम, तूने लिखा तो और है वो no नीचे है। दूसरी थी, ये ऊपर दूसरी थी, देख रहा है? वो देख नीचे वाली अब तक उधर पड़ी हो, देख। छोड़ छोड़ के अभी पूरा क्राफ्ट करने लूट लगे। उसको। अरे क्राफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? जितने भी पड़े ना सबको लूटूंगा। ओ भाई मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया दोस्तों। Can't carry more. हाँ पता है, और नहीं कैरी कर सकते, लेकिन हीलिंग उठा लो, हील कर लो। हो गया ना, रिच वुड भी फुल हो गया। इधर बहुत सारे लोग मरे, तो अपने लोग भी मरा कोई नहीं। हाँ ये लोग हैं ना इधर। ओ भाई जरा मुश्किल था बहुत इसको मारना, लेकिन मार दिया गाइस, मार दिया इसको भी। और कौन मरा है क्या इधर? हीलिंग और कुछ जाके बात करके देखते हैं, अभी बहुत हो गया। अरे यहाँ पे भी बहुत कुछ रखा हुआ है। I'd have to ditch something. Aloy, your deeds reenact the old stories. Another metal devil struck down upon the slopes. हाँ If you पता। hadn't returned, the tribe... You saved the tribe. हाँ। Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving. So much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. तो इसको क्या पूछे अभी क्वेश्चन? लेटर अबे कुछ तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ लेटर। I need to go inside the mountain. बता ज्यादा। अबे The matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. तो चलो अंदर जाते हैं। बात करना है ना तेरे। हाँ वही अंदर जाना है ना, एक बोला ना माउंटेन के अंदर जाके देखने का। कौन खास रहा है अभी? कौन खास रहा है? मैं तो नहीं खा रहा। अच्छा ये लोग भाग के चलो। वक्त की कमी है दोस्तों। हेलो। You've returned. हेलो। Teb? टैब? अबे टैब किधर है? वो किधर है पता नहीं। Aloy, so you have finally returned. हाँ। She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All-Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. अभी you are not stopping me. Ignore them and enter the hatch. नहीं इनसे बात करके जाएंगे। Lonsra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Finally. Yes, finally. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted.
Oh. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. वो लास्ट टाइम अपन यहाँ पे आए थे तो अपने को अंदर जाने नहीं दिया था. अभी जा रहे हैं अपन अंदर. ये लोगों को लगेगा अभी भगवान से बातें कर रहे हैं अपन. वाह. आसाराम बापू है क्या तू? ऐसे नाम मत ले किसी का. राम रहीम. सब लोग देख रहे थे ना कैसे. ओ ये कैसे हो सकता है. अब इनसे झूठ तो नहीं बोलने वाला और इनको सच समझ क्या है. हाँ अब उनको लगेगा अपन संन्यास लेने गए. तो संन्यास नहीं क्या बोलते. बताओ टेक्निकल डिपार्टमेंट में आए. हम तो भगवान सोच रहे थे कोई बैठे होंगे पंगा. I never stopped. लिफ्ट का कमरा है तो हमारे यहाँ पे ऐसा. चुतिया कट गया इन लोग. बोले अंदर वो भगवान होंगे, इंद्र देव बैठे होंगे, नीचे चढ़ रहे होंगे, बादल बादल होंगे अंदर. ऐसा is where I was born. एक यहाँ तो फैक्ट्री है पुरानी, लाइट जली है. अच्छा साइलेंस को क्या प्रॉब्लम है. जब भी अपन बोलते हैं अपन पैदा हुए वो बोलता नहीं 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 तुझे बनाया गया. वेब का मैसेज पड़ा है. Looks like they didn't like this door very much. Identity scan. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are cleared to proceed. Welcome to the Lyceum, a place of learning. Lyceum. So, what was this place exactly? Oh my. The dream of Apollo. Never realized. But why not? भाई साहब तो जीरो कंप्यूटर्स देखना कितने सारे ला के रखे इन लोग ने लाइन से. एक मिनट ला ले यार. ना अबे नासा का रॉकेट यही होता है वो दिखाने के लिए बचा हुआ. तो जाना किधर है. एक सेकंड जाना किधर है. ऊपर. अच्छा कंप्यूटर में नहीं सिर्फ मेरे को वो ला दे सीपीयू. बाकी में कुछ जुगाड़ लेंगे. टीवी में लगा दे. सीपीयू मिल जाए तो बाकी सब में कुछ जुगाड़ लेंगे. That sounds important. मॉनिटर के टीवी को नीचे रख लूंगा. मॉनिटर. ये क्या है. गायस डाइंग फ्ली. ओह ये सब. ओह लूडो खेलने बोल रहे. Elizabeth. ओह ये रही गाया. This message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. What? Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryostorage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print will allow you to re-enter this facility, obtain one of the focus devices stored below, and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter other facilities, and over time, harness their technologies to rebuild the system core and reboot Gaia. A moment, Elizabeth.
This is most unfortunate and unanticipated. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them, in place. They are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. What if... Oh. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted. But if that is so, the door will never open for you. You will never view this message. Then I have failed. And life will end. No. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you, all things are possible. Go to the ruins of Gaia Prime. Find the control room, and within it, the Master Override. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. अच्छा बाकी है वाह So, बहुत लंबा है. you're even more extraordinary than I thought. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. I'm an instrument. Manufactured, born in destruction and Scam हो गया इसके साथ. fire. To quench the flames and heal the world. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the bitter climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. मैसेज का फायदा देखा क्या? हाँ देखा तो अभी क्या करना है आगे गाइस Identiscan malfunction rectified. Elufia 9. Route 1 access unsealed. वाह ये तो ऊपर जाने का रास्ता होती ना दोस्तों. ये ऐसे ऊपर जाने का क्या ऊपर जाने का था. वाह मुझे पता नहीं था ऊपर जाना है. सीधा नीचे कूद गया. This is going to be interesting. एग्जिट द फैसिलिटी. बस हो गया इतना ही काम था अपना अंदर. अब ये लोग को बाहर आएगा. अरे कितने लोग जमा हो गए देख रहा है. बोलना अंदर अमिताभ बच्चन शाहरुख खान सब. ये देख अरे पैर धो के भी पहले फिर बाहर निकला. बहुत गलत बात है ये. Aloy, forgive! The goddess spoke to you? She did. What did she say? That I was born to lift a curse, to kill a metal demon. How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? हाँ जरूर करेंगे. It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! All praise Aloy, anointed of the Nora! First you shun me, now this? वही तो. I will not be worshipped. I'm not anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there.
As Aloy says, so it shall be. Nora! Make way for Make Aloy! way, that she may forge the path for others to follow. Oh. एकदम शान से चल के जाएंगे, आंखों में आंखें डाल के। So much corruption still spreads beyond the रखो ये रखो, इधर ऐसा शान से चल के जाएंगे। Aloy, how kind of you to spend a moment with me before you depart. There can be no doubt now. You are a blessing made flesh, the will of the goddess incarnate. It's really not that simple, Tirsa. But I guess it's close enough. I know the path ahead will be dangerous. To kill a metal devil sounds impossible, but I believe in you. Thank you. Thank you. सच में thank you बोल दी। नोरा के बारे में The Nora have suffered terrible losses, Tirsa. That will be for the moment, and as I Rost. Tirsa, I want to know Rost's story. Why he was made an outcast. He never told me. Said he took an oath of silence. What did he do? Oh. Yes, that. What crime did he commit? I will tell you if you wish. But it is a long story. Are you sure you want to hear it now? क्या बोलते हैं? सुनेंगे? Hello. हाँ. सुनेंगे. Rost important. Of course I want to hear it. Yes, बैठो. Tell me. बैठो. Rost never committed any crime. फिर? He was an outcast by choice. Choice? What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. फिर? At Mother's vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. आगे. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village, near the Karja border. But at the time, many families lived there. Ross was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. Oh. His daughter? What was her name? Alana. इसलिए She अपना was नाम just एला रखा। 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? Or rescue the hostages? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a Brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened to Rost's daughter? She was killed? Rost was one of the Braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. There were 6 hostages still alive when they reached the border. Alana among them. Oh. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Why? Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a death seeker.
A Death death seeker क्या होता seeker? है? What is that? One who dies to go seeking, and in seeking brings death to others. Oh. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to all mother's care. Oh, no. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. I don't understand. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here with All Mother. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But Rost came back. But Ross did return. Yes. मेरी आ रही है. A full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the sacred land. A hunting party came upon him. He was delirious, in agony. By law, he should have died where he lay. But one of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave who'd lost a mate and 2 sons to the very Outlanders that Rost pursued. So Rost never finished his mission. To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian, Ban-Ur, the Claim, Utaru Land, further even into the Forbidden West. The last he killed nearly got the best of him. Wounded, he stumbled and crawled back to us, hoping to die as close to the sacred. He never expected nor asked to be dragged across the border and nursed back to health, leaving us, the matriarchs. So Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a death seeker, Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast. Yes. We offered to do so on the condition he never speak to anyone of this exception. After all he did, all he suffered, to be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the sacred land, let alone the embrace, so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. But then you found me, and gave me to him. Yes. Another compromise. The matriarchs feared you and would not let you be raised by the tribe. And so we turned to Rost. I knew that he would take care of you, bring you up, teach you to worship All Mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man who'd lost his daughter and made him raise an infant girl? Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as a gift and never a burden. All right, Tirza, that's quite a story. It's time for me to move on. I thank you for doing what you could to help me through the years, and for telling me Rost's story. I wish I could have done more, but I am just one woman. As am I. No need to sell ourselves short. Thank you, Aloy. I will pray for you. Okay, I guess it can't hurt. The anointed will cleanse the corruptions beyond the sacred land. She has earned my सबसे बातें करते जाओ, क्या पता वापस आए ना आए. The anointed will cleanse the corruption beyond the sacred क्या बोल रहा है?
She has earned my faith 10 Hello. times over. My life has been long, but I've never seen anything like that. Tirsa was right. A blessing, not a curse. We were so unsure. The anointed. So she can Anointed. I told you, Lansra. The anointed has shown us the goddess's mercy. Aloy. Say that you'll... Of course. That much is simple. Complicated. But maybe if I took you into the heart of the mountain... No. At least... No, please don't think less of me, Aloy. But the goddess chose you to see that. Not me. Right. I'll be on my... I always knew... Neither are you, Var. Perhaps. चलो फिर चलते चलते ऐसे सबसे बातें करते रहेंगे ना. I'm honored to meet you. I am honored to meet you. और कोई? You're proof of the goddess's love for us, anointed. It seems so long ago that you were an outcast, anointed. Another lifetime. I don't know what to say. It seems You're so long ago anointed. that you were outcast, हो गया ना anointed. सबसे बातें करें Another lifetime. सबसे तो होएगा. इन सबसे बातें कर रहा नहीं तो पता चला लड़ाई के मैदान में आके भी मेरे से झगड़ा चालू कर दिया. So guys, I guess आज के लिए इतना एपिसोड काफ़ी है. आगे हम लोग को जाने का शायद से बिटर क्वीन तक, जहाँ पे अभी जैसे एलॉय ने इन लोग को बोला कि वहाँ पे कुछ फाइट बीट होने वाली है मेरिडियन में. वापस मेरिडियन को बचाने का है यहाँ पे. आई डोंट नो क्या होने वाला है आगे स्टोरी में. It's heavy. जानने के लिए देखते रहिए होराइजन ज़ीरो डॉन का नया एपिसोड. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. I'm Captain Jack Sparrow.